चलिए जी 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है 2 concentric circles. Concentric circles means their center is common. So let's call for these 2 circles the common center is point O. हमें गिवन है जो लार्जर सर्कल के लिए जो कॉर्ड है AB, the same chord is acting as a tangent to the smaller circle and let's call this point of contact as point P. स्टार्ट करने के लिए लेट्स ज्वाइन OP हियर एंड OA हियर. OP that's radius of smaller circle, so it's 3 centimeter. OA is radius of larger circle, so it will be 5 centimeter. Now we know by theorem जो रेडियस है फॉर अ सर्कल, ये छोटे वाले सर्कल की बात करें तो जो रेडियस है OP that will be perpendicular to the tangent, है ना, that's by theorem. So we can say here OP is perpendicular to AB और ये जो एंगल है at point P, this is of 90 degree. Now if we'll consider this right angle triangle APO, इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे so we'll get is your side square plus perpendicular square is hypotenuse square. Putting the values here, OP is 3 centimeter, OA is 5. Solving it will get AP square is 16 or AP is 4 centimeter. That is this length, AP is 4 centimeter. अब हम 9th की अगर एक थ्योरम याद करें, that is सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, that is ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है इसमें सेंटर O है, यहाँ से हम कॉर्ड AB पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे then that perpendicular will bisect the chord. Bisect the chord means ये जो AP है और PB है ये इक्वल हो जाएंगे. That means PB will also be 4 centimeter और AB length will be your 8 centimeter. And that's what we had to find. So thus the length of the chord is 8 centimeter and that's our answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.